तो ओम भाई, डाइट जैसे दूसरा एक पिलर है वो है एक्सरसाइज। तो आपके अकॉर्डिंग वेट लॉस के लिए कौन सी एक्सरसाइज आप रेकमेंड करते हो? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि वेट लॉस के लिए कार्डियो अच्छी है और बॉडी बिल्डिंग के लिए वेट ट्रेनिंग अच्छी है, पर मेरे हिसाब से दोनों वेट लॉस के लिए तो होती है। Right. Very true. So there are broadly two categories of exercise, which you rightly said. One is the aerobic, and other is anaerobic, right? So aerobic exercise जो होती है, आप ये तो सब जानते हैं, maybe अगर जिम जाते हैं तो आपको ये बताते रहते हैं, right? So aerobic is the the running, the jogging, swimming. These are all aerobic exercises. Uh, so aerobic exercises naturally, because क्या होता है कि वो ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा लंबा चलता है, that is ideal for losing weight. But the ideal person who loses weight understands that only aerobics is not right. Aerobics alone isn't, because see, I'll tell you why. Again, this comes down to the same principle. So see, what happens is that we talked about rebound of the weight, right? So one of the mechanisms of rebound, आप broadly आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है, फैट कम करना है, बट मसल बढ़ाना है, राइट? अगर आप फैट कम करोगे और मसल बढ़ाओगे तो क्या होगा कि जो बॉडी का अल्टीमेटली जो कंपोजिशन है, इट इज बेस्ड ऑन जो बॉडी का जो हीट डिसिपेशन है, द अदर मेटाबॉलिक इफेक्ट्स है, वो मसल कंटेंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो इफ यू आर एबल टू लेट्स से आपने फैट लॉस किया, आपने मसल बढ़ाया, then your possibility of maintaining that same weight is much better, right? So problem with aerobic exercises is that it will not significantly increase muscle bulk. वो आपका फैट कम कर देगा, लेकिन वो मसल को उतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ा पाएगा, especially the muscles which are required for maintaining the weight. So what you need to do is you need to have an ideal combination of aerobics, but you also need to do weight training. You also need to do some exercises which will increase the muscle bulk. If you are able to do this in combination, that's why any professional athlete or any professional bodybuilder or anybody, any professional, हम सब amateurs हैं, right? But you take a sports person, you take a professional, you take an athlete, high performance athlete. There is no athlete except for those marathon runners and all that. There are no athletes who do only, even they also do weights. So there are no athletes who do only one type of exercise. They always do combination. They always do aerobic and anaerobic. दोनों ही करना पड़ता है सबको, right? Proportion may be different for different people, right? At some sports you will require more aerobics and less anaerobic, or the weight. Some cases you will require more of weights and less of this. But you will have to do a bit of both. If you don't do both, there is no sustenance, right? वो break हो जाएगा, cycle रहेगा नहीं, right? So if you are again attempting to lose weight, जिम ट्रेनर्स को बहुत सारी फिजियोलॉजी नहीं पता होती, राइट? तो आप व्हाट यू शुड डू इज यू डू एरोबिक्स 70% ऑफ द टाइम, यू डू एरोबिक्स, बट 30% ऑफ द टाइम यू ऑल्सो स्पेंड ऑन डूइंग एनारोबिक्स लाइक वेट, राइट? भले स्मॉल अमाउंट स्टार्ट, डोंट डू मच, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, हमें पता है, लेकिन उसको आप इतने अमाउंट के रखें ताकि उससे थोड़ा मसल बल्क बने, ताकि जो वेट लॉस आपका हो रहा है उसको आप मेंटेन कर सकें। और ये एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है, वेट लॉस करना है देन यू नीड डाइट एंड एक्सरसाइज, राइट? बट वेट मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज इज बेस्ट, राइट? खाली एक्सरसाइज है, सो सम पीपल का मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वेट, खाली एक्सरसाइज विदाउट डाइट विल नॉट लीड टू वेट लॉस. Only exercise without dietary restrictions, I repeat, will not lead to weight loss. Only dietary restriction can lead to weight loss, but you will not maintain the weight. So to lose weight, you need dietary restriction, but to maintain the weight lost, you need exercise, right? So you need to have a combination of both the factors. So खाली डाइट करने से फायदा नहीं है, खाली एक्सरसाइज करने से फायदा नहीं है, तुमको दोनों ही करना है. एक्सरसाइज में भी खाली एरोबिक करके फायदा नहीं है, खाली एनारोबिक करके फायदा नहीं है, तुम्हें बोथ करना, राइट? सो यू हैव टू डू मोर देन वन थिंग्स, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स सो दैट इफ यू व्हाटएवर यू लूज वेट, बट यू आल्सो मेंटेन व्हाट इज लॉस्ट एंड यू विल लिव हेल्थी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं जब भी मतलब किसी से बात करता हूँ, मेडिको हो या नॉन मेडिको, तो उनका जब भी चीट डे होता है, माना कि जब भी कैलोरीज वो ज्यादा खा लेते हैं, तो कहते हैं कि रात को साइकिलिंग करके आऊंगा या टहल के आऊंगा क्योंकि कैलोरीज बर्न करनी है. तो आपके हिसाब से मतलब चीट डे पर हम लोग एक्सरसाइज ज्यादा करके कॉम्पेंसेट कर सकते हैं या नहीं, वो मैं जानना चाहूंगा. राइट. सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ चीट डे, राइट? यू नो, अगेन लॉट ऑफ Instagram and celebrities, like I think
Tiger Shroff does a lot of cheat days. So he talks a lot about this also. I've seen that. A lot of celebrities say these things. Remember, see again, जो फिल्म स्टार्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं वो उनका प्रोफेशन है, ये समझे, उनका और आपका अलग है. उनको ना ये करना पड़ता है. इफ यू नो विराट कोहली becomes 20 kg more, he will not be able to play professional cricket to the level which he is playing, because उसकी रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है. उसको करना पड़ता है, राइट. तो उसको करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा ये भी होता है कि थोड़ा चीटे करे, उसमें क्या है, राइट. सो टाइगर श्रॉफ हैज टू लुक इन अ सर्टेन वे बिकॉज ही एक्ट्स इन सर्टेन मूवीज वेयर ही हैज टू लुक इन अ सर्टेन वे. सो उनका इक्वेशन अलग होता है. अब हम जो हैं, हमारा चीज अलग है, हमें हेल्दी रहना है, ठीक है. सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू चीट डेज. Rather, you should try and, like I said, maintain everything. Enjoy what you're doing. जो आप existing आपका जो dietary changes है, उसको आप ऐसा नहीं यार मैं suddenly है ना सब खाना बंद कर दूं, ऐसा नहीं होगा, right? आप you were eating chocolates every day. Don't eat it, right? या तो 5 चॉकलेट खाते थे, उससे अभी एक कर दो, फिर बाद में बंद कर देना, ठीक है. So your habit of eating chocolate goes away, right? So cheat days are not very good ideas, because if you could do a cheat day if you are able to have such a good discipline कि नहीं, मैं probably these athletes and professionals are able to do that. हमारे में डिसिप्लिन नहीं है ना, हम तो बिंज ईट करेंगे, राइट. जब चीट डे होगा मतलब पूरे वीक में जो डेफिसिट किया था वो पूरा खा लेंगे, राइट. अगेन चीट डे को आप एक्सरसाइज से कॉम्पनसेट करोगे, वो 1-to-1 रिलेशन नहीं होता है, नहीं है. वो नहीं होता है. ये देखिए, ये जो आप आजकल जो मशीन्स है वो बताते हैं कि इतना कैलोरी बर्न किया, उतना कैलोरी बर्न किया, बट वो दैट इज नॉट एक्यूरेट. इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट एस्टिमेट. Every person burns different amount of calories at different points of time even with the same exercise, right? So calorie कितना burn होता है वो really actually estimate करना possible नहीं है. And again, calorie in calorie, though that is ultimately what we tend to do, that equation is not always 1+1 is not always 2, right? ये मेडिसिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जितना लोग जनरल पब्लिक नहीं समझते, न्यूआंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें. ये जो बाकी फील्ड्स वाले हैं ना, उनको ये नहीं समझ आता कि इट इज नॉट ऑलवेज 1+1 is 2. ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है. सो बाइनरी है ही नहीं, मेडिकल बाइनरी नहीं है इसमें, है ना. सो द पॉइंट इज दैट रादर व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप इंस्टेड ऑफ जस्ट कटिंग एवरीथिंग ऑफ, ग्रेजुअली कट द थिंग्स ऑफ, राइट. ग्रेजुअली धीरे 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 उसको कम करो, राइट. एंड धीरे धीरे उसके रिप्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द अदर थिंग विच मे बी चॉकलेट्स आर नॉट गुड फॉर यू, देन व्हाट इज समथिंग विच इज गुड फॉर यू, विच यू वुड एंजॉय ऑल्सो. फाइंड दैट, उसको ढूंढो और उससे रिप्लेस करो, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू शुड वर्क टूवर्ड्स, राइट. सो हमें हमेशा, आज आपको शायद आईफोन पसंद है, मे बी 5 साल के बाद आपको कोई एंड्रॉइड का कोई नया फोन आया है जो फ्लिप वाला ऐसे बंद होता है खुलता है, वो वाला पसंद होगा, राइट. सो ऐसा नहीं है कि आज आपको डेयरी मिल्क पसंद है तो मे बी आफ्टर 5 years यू लाइक समथिंग एल्स, राइट. योर प्रेफरेंसेस चेंज. हम एक्टिवली हमारे प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, राइट. यू कैन डू दैट, राइट. सो ऐसा नहीं है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक दैट, यू कैन नॉट लिव विदाउट, राइट. ओनली थिंग इज दैट आज आपको लगता है कि मैं नेटफ्लिक्स देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, शायद 5 साल के बाद यू वुड से क्या नेटफ्लिक्स, right? So because your preferences could change, it is possible for you to change, right? You are it's जरूरी नहीं है कि आप किसी से, हाँ, बट उसको ग्रेजुअली उससे डिटैच हो, धीरे 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 उससे आप दूर होते जाओ और कुछ और चीज पे आप फोकस करो जिससे आप which is more healthy for you, which you can incorporate, right? I know people जिन्होंने इस तरह से करके what they found is कि यार पहले तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे, अब उनको एक्सरसाइज में मजा आता है. Now they have been literally, when they're addicted to eating ice creams and chocolates, they are now addicted to exercising. That actively shift they are able to make. ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए cheat days नहीं है, because उनके लिए cheat day क्या है कि मैं exercise नहीं करूँ, that is a cheat day. That is, so for them the pleasure is in exercising. They actually enjoy exercising, and because they have started, they're enjoying food earlier. Now their enjoyment, their pleasure comes from exercise. And because their pleasure comes from exercise, their life has been flipped, has been changed for the better, right? So, इस तरह से I think what you need to understand is कि what is holding you back. उससे आप एकदम से डिटैच नहीं हो सकते हो, एकदम से you can't stop it cold. उससे धीरे 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 उससे हटते जाओ और दूसरी चीज से आप लगाव बनाते जाओ, and that is what something which works better rather than
having cheat days and then compensating that with more exercise. That generally doesn't work, right? Don't feel I feel guilty. Don't feel guilty about it, right? आप लगता है कि maybe it's difficult for you to go without eating outside for the whole week. ठीक है, आप हफ्ते में 2 बार बाहर खाना खाते थे तो आप 1 बार खाना खाओ, 2 से 1 करो. और एक में भी अगर आप you are binging eating everything which is there on ordering twice or thrice, instead of that डेजर्ट कट ऑफ कर दो, बाकी आप खाओ, राइट? सो मेक स्मॉल चेंजेस व्हिच आर सस्टेनेबल. अब यहाँ बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्सरसाइज के मामले में सबसे कॉमन एक्सक्यूज ये होता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे दिन में मेरे पास टाइम ही नहीं एक्सरसाइज करने का. तो आमतौर पर ऐसे लोगों को लोग मतलब डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 10,000 स्टेप्स करने हैं. तो आपके हिसाब से वेट लॉस के नजरिए से 10,000 स्टेप्स कितने प्रैक्टिकल और कितने इफेक्टिव हैं? या 10,000 स्टेप्स इज अ रीजनेबल नंबर फॉर अचीव, अगेन फॉर अ फर्स्ट स्टेप. अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, सो दैट समथिंग इट्स गुड टू स्टार्ट विथ 10,000 स्टेप्स. इनफैक्ट so for busy people and a lot of other things, there are now a lot of new studies which have shown that overall दिन में if you are more physically active throughout the day, that so there is a term I said in my video also, sitting is the new smoking. Yeah, right? What people have now realized is कि जो लंबे टाइम बैठे रहते हैं ना, that is the problem, right? So within your day also you can, and most of people will be busy, right? You will be 8-10 hours a day you will be sitting on a chair. But what you need to do is you can put a small timer in your mobile phone or your Apple Watch or जो भी आप use करते हैं, to remind you that every 40 minutes 50 minutes you get up, walk around, right? आप थोड़ा चलो, थोड़ा stretch करो, right? Maybe jog a little at your place, right? That इतना करने से body remains active. That is very effective, right? That is very effective. It will not cause weight loss. It will maintain weight. It's very effective for weight maintenance, right? So ये सब चीजें they are very good for weight maintenance. So 10,000 steps is a good reasonable target if you are starting off, right? अगर आप शुरुआत करें, हाँ, then if you could gradually then increase ना, अभी 10,000 से मैं 12,000 करूंगा, 12 से 14 करूंगा, you gradually increase that. But as a starting point, it's a reasonably good target to have. So that अगर और in fact now studies also shown that ये fitness watches होते हैं, they are helpful. People are skeptics about it, but actually it is helpful. There are clinical studies which are shown. So इससे क्या होता है कि तुम्हें एक reminder मिलता है कि look, I was not active today, right? Whole day I was sitting only. Instead, so now I've come home, right? Maybe I'll compensate that by walking a little bit more than what I usually do, right? Or you see that I've been reasonably active today. Maybe I'll top it off by doing a little bit more of activity today. So that way, it gives you a reminder that what you need to do, आपको कितना करना है. So it helps. So if you're using a tracker of any kind, it's a good thing, right? And set a target for yourself. Maybe 10,000 steps is a broad figure. Maybe in your situation you would like to do more. Maybe in some situations they might not be able to do 10,000. Start with something which is a reasonable number, which works for you, and try to achieve that. And if you're doing that discipline over a period of time, फिर धीरे धीरे आपके टारगेट्स बढ़ाते हैं. अब एक्सरसाइज में आपके हिसाब से आरडीए क्या होना चाहिए, मतलब रेकमेंडेड डेली अलाउंस, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से 150 मिनट्स पर वीक होता है. तो आपके हिसाब से वेट लॉस के नजरिए से हमें कितना डेली करना चाहिए एक्सरसाइज? So again, exercises for weight maintenance, that is very important, not for weight loss. And 150 minutes a week is a reasonable target. Again, when you have guidelines जो target बनाते हैं, they always look at a broad sense कि भाई सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबके लिए क्या target डाल सकते हैं. So 150 minutes a week is a reasonable target per week. But उनकी जो structure है उससे देखते हैं, तो what they are saying is that 150 minutes क्यों नंबर आया है? So what they are saying is कि आप every day you do 30 minutes and don't work out on weekends, right? So they are saying that आप 30 minutes daily करो, and फिर वीकेंड्स पे तो आप कुछ करोगे ही नहीं, आपको पता है कि आप कुछ करने नहीं वाले, तो आप छोड़ दो उसको, है ना? बट 5 days a week you work out, right? That is what their assumption is. इंडिया में technically our weekends are not like their weekends, right? So what I suggest to my patients is कि whosoever comes to me, that don't do it weekday वाला concept छोड़ो. Start with 30 minutes every day, right? So that is what I suggest. Right, so that will come to maybe 200 minutes a week जितना होगा, right?
slightly more than 150-minute thing, but you do it every day, right? Do it, एक time fix कर दो, या तो आप weekends पे maybe you don't go in the evening, you do it in the morning. You're free in the morning, do it in the morning, right? So set a time for yourself. बोले इतना time मैं करूँगा, right? That every day I'll work out for 30 minutes, right? And that reasonably works. So yes, 150 minutes a week is a reasonable target to have. But I think probably you should stretch that to 200 minutes. Start with that, and maybe हर day 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ if you can. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।